Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 12th lecture of Step Up Your English Speaking. In today's lecture, we are going to understand what are the conditional sentences and how do we use these conditional sentences in our everyday conversations. So let's have a look at conditional sentences. Conditional sentences होते क्या हैं? तो basically conditional sentences ऐसे sentences हैं जो आप use करते हैं सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हुए जो कि हो सकती थी दैट माइट हैपन, जिनके होने के चांसेस थे, या फिर पास्ट के अंदर आप री इमेजिन करते हैं किसी सिचुएशन को कि उसके अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता था और उसके पॉसिबल आउटकम्स डिफरेंट हो सकते थे. So there are four types of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. तो zero conditional आप use करते हैं किसी fact को या habit के बारे में बात करते हुए. So if you mix blue and yellow paint, अगर आप blue और yellow paint को mix करते हैं, it turns green. So this is a universal fact कि ये चीज ऐसे ही होगी, it cannot be changed. ठीक है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर दो क्लॉजेज होती हैं बेसिकली. पहली क्लॉज के अंदर इफ जैसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल देखेंगे जो आपको बताते हैं कि अगर ऐसी चीज होती है, शर्त है कि अगर ये काम होता है तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, और सेकंड क्लॉज के अंदर आप उस कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशनल क्या बताता है? इट एक्सप्रेसेस अ रियलिस्टिक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस. अगर प्रेजेंट के अंदर आपको ये काम करते हैं तो फ्यूचर के अंदर उसका एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आप उसके बारे में बात करते हैं. If we work hard, we will be prepared. If we work hard, we will succeed. ठीक है. तो जो आपकी पहली क्लॉज है उसके अंदर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं और सेकंड क्लॉज के अंदर आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करते हैं. सेकंड कंडीशनल आपको बताता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो कि हाईली अनलाइकली होती हैं या इम्पॉसिबल होती हैं और उनके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. इफ आई वर यू, ठीक है, इसके अंदर आप सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ये चीज फर्जी है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. इफ आई वर यू तो क्या होगा? आई वुड स्टडी मोर. लेट्स हैव अ लुक एट थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल के अंदर आप पास्ट के अंदर हुए हुए किसी वाक्य को री इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे डिफरेंट हो सकते थे. सो इफ यू हैड कॉल्ड मी, आपने मुझे कॉल नहीं की, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करते, आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया होता. लेट्स हैव अ लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. सो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पहली क्लॉज होती है इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस होता है. मेन क्लॉज होती है, रिजल्ट होता है उसका. ठीक है. इफ इट रेन्स, अगर अभी बारिश होती है तो फ्यूचर के अंदर इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ठीक है. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि अगर अभी बारिश होती है. सो वी विल स्टे एट होम. दिस इज द मेन क्लॉज. चार टाइप्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बेसिकली: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. तो जीरो कंडीशनल क्या होता है? ये वो कंडीशनल है जिसको यूज करते हुए आप जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं, आप साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप पहले क्लॉज के अंदर इफ लगाते हैं और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर उसकी बारे में बात करते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बताया जाता है. सो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि इट बॉइल्स. ठीक है. तो अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं तो वो है इफ इट इज कोल्ड वाटर फ्रीजेस. ठीक है. दोनों के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है. Let's have a look at some of the examples of zero conditional sentence. If you mix red and blue, you get purple. If you press this button, the machine stops. If water reaches 0 degrees Celsius, it freezes. If you touch fire, you get burned. If you don't water plants, they die. तो आप देख रहे हैं कि पहले कंडीशनल क्लॉज है, इफ का इस्तेमाल करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है, और उसके बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस है उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए डिस्कस किया गया. फर्स्ट कंडीशनल आप तब यूज करते हैं जब आपने अभी प्रेजेंट के अंदर या नियर फ्यूचर के अंदर किसी काम के बारे में बात करनी होती है और वो काम शर्त होता है कि फ्यूचर के अंदर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है.
सो इफ इट रेन्स, इफ के बाद आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, फ्यूचर के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करने के लिए आपने विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, वी विल स्टे होम. सो इफ आई स्टडी, आई विल pass the exam. If it rains tomorrow, we will cancel the picnic. If she studies hard, she will pass the exam. If they arrive early, we will start the meeting on time. तो यू हैव टू नोटिस कि जो पहली क्लॉज है उसके अंदर अभी के बारे में बात की हुई है कि अगर अभी हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. इफ दे अराइव अर्ली, वी विल स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम. इफ आई सी जॉन, आई विल टेल हिम द न्यूज. ठीक है. इफ वी लीव नाउ, वी विल कैच द बस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशनल. सेकंड कंडीशनल आप इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं और आप इसके अंदर पहली क्लॉज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और सेकंड क्लॉज के अंदर आप वुड का इस्तेमाल करते हुए, जो कि बताता है कि आप किसी इमेजिनरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इफ आई won the lottery, I would travel the world. If I won the lottery, I would travel the world. If he were here, he would help us. तो he के साथ यहाँ पे वर्ब इसलिए लगा है, यूजुअली आप he, she, it के साथ was का इस्तेमाल करते हैं या फिर थर्ड पर्सन किसी और सिंगुलर के साथ भी आप was का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे वर्ब इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि दिस सिचुएशन इज नॉट ट्रू, दिस इज अनरियल, यू आर इमेजिनिंग इट. तो whenever you are imagining it, तो he के साथ, she के साथ, I के साथ, you के साथ वर्ब का ही इस्तेमाल होगा. If he were here, he would help us. Let's read some of the examples. If I won the lottery, I would travel the world. If she were here, again आप imagine कर रहे हैं, she would help us. If they had more money, they would buy a bigger house. If I were you, अगर मैं तुम होती, I would take that job offer. If he spoke Spanish, he would understand this movie. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंडीशनल, जिसके अंदर आप पास्ट के अंदर किसी वाक्य को री इमेजिन करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो आप किसी एक एक्शन को भी री इमेजिन कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस को भी री इमेजिन कर रहे हैं. इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. तो आप उसके कॉन्सिक्वेंस को वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करेंगे. इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, शी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. सो थर्ड कंडीशनल की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने. इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, आई वुड हैव गॉन. ठीक है. पास्ट के अंदर आप एक चीज इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट हो सकता था. इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, शी वुड हैव कॉट द ट्रेन. इफ वी हैड सेव्ड मोर मनी, we could have bought a car. If he had studied harder, he would have passed the exam. If they had told me, I would have helped him. Apart from the four basic conditionals, sometimes you can see sentences which are examples of mixed conditionals. ठीक है. उसके अंदर दो different conditionals का mixture हो सकता है, combination हो सकता है. आप पहली क्लॉज के अंदर past के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरी क्लॉज के अंदर हो सकता है आप present के बारे में बात कर रहे हो या future के बारे में बात कर रहे हो. If I had studied harder, ठीक है, you are imagining it in the past, reimagining the past. तो this is third conditional. I would be at university now. अगर यहाँ पे होता I would have been at the university. ठीक है. तो ये फिर कंप्लीट थर्ड कंडीशनल होता है जिसके अंदर बात जो एक्शन है वो भी पास्ट में है, उसका कॉन्सिक्वेंस भी पास्ट में है. ठीक है. बट दिस सेंटेंस इज डिफरेंट कि इसके अंदर जो दूसरी क्लॉज है वो प्रेजेंट के बारे में बात करी है. सो दिस इज अ मिक्स कंडीशनल सेंटेंस. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ I had not missed the bus, I would be at work on time. If I had studied medicine, I would be a doctor now. If she had taken the job, she would be living in New York. If they had left earlier, they would be stuck in traffic now. If he had saved his money, he could be traveling right now. If I had learned French, I would be working in Paris. Let's read this paragraph and see
how we can use conditional sentences in everyday real life situations. If you mix yellow and blue, you get green. This is an example of zero conditional. ठीक है, पहली क्लॉज के अंदर एक चीज है जिसका आउटकम चेंज नहीं हो सकता, तो आप दोनों को सिंपल प्रेजेंट यूज करते हुए एक्सप्लेन करेंगे. इफ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन. Sarah explained to her little brother. तो ये है zero conditional. We can do a painting experiment this weekend. If it rains, we'll stay indoors and paint all day. ठीक है, if it rains, तो उसका consequence क्या होगा, तो फ्यूचर में आप क्या प्लान करेंगे. तो ये है फर्स्ट कंडीशनल. Imagine if we had a huge canvas and endless paint splash, we could create a masterpiece together. तो आप imagine कर रहे हैं second conditional को use करते हुए, if we had a huge canvas and endless paint splash, तो हम क्या करते, we could create a masterpiece together. तो ये है example second conditional की. She said, her eyes sparkling with excitement. Last year, I missed the art competition because I had flu. If I hadn't been sick, you are reimagining the past. और फिर इमेजिन कर रहे हैं आप कि उसका कॉन्सिक्वेंस कैसे डिफरेंट हो सकता था. इफ आई हैडंट बीन सिक आई वुड हैव वन फर्स्ट प्लेस फॉर श्योर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड कंडीशनल. प्लीज पॉज द स्क्रीन and write the correct answers. 3, 2, 1. If it rains, the picnic will be cancelled. If I were you, again imaginary situation है इसलिए आप I के साथ were लगा रहे हैं. If I were you, I would apologize. If they had known, they had come earlier. They would have come earlier. If she studies, she will pass the exam. Let's move on to the next examples. Please pause the screen and complete this test. 3, 2, 1. If I knew the answer, I would tell you. Second conditional. You are imagining this scenario. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. Future के अंदर क्या consequence है? If he had asked, she would have helped him. Third conditional. Past के अंदर हुए हुए किसी वाक्य को आप imagine कर रहे हैं. So let's have a look at these examples कि कैसे इन conditional sentences को आप अपनी conversation में use करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे आप सवाल करते हैं और कैसे आप उनका जवाब दे सकते हैं. What do you usually do if you feel tired? I feel tired. If I feel tired, I usually take a short nap or drink a cup of coffee to recharge. First conditional. What will you do if it rains this weekend? If it rains this weekend, I will stay home and read a book or watch a movie. Second conditional. What would you do if you won $1,000,000? You are imagining this. If I won $1,000,000, I would travel the world, buy a house and donate to the charity. Third conditional. What would you have done if you had missed the bus this morning? ठीक है? If I had missed the bus this morning, I would have taken a taxi or called a friend for a ride. So keeping this in view, you have to answer all of these questions. So you can practice conditional sentences. What do you usually do if you feel stressed? What happens if you don't get enough sleep? What will you do if you pass all your exams? How will you spend your day if you have a holiday tomorrow? What would you do if you could live anywhere in the world? How would you spend your time if you didn't have to work or study? What would you have done if you had forgotten your best friend's birthday? How would your life be different if you had chosen a different career path? If you have any questions, please comment down below. And I will meet you in the next lecture.